Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी मोदी व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं बाहर से। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली, चाय नाश्ता भी हो गया हमारा। तो अभी मेरे को लेट हो रहा है, तो मैं अभी जल्दी जल्दी जाऊँगी। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है बाहर का, ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। मेरा चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने घर पे, क्योंकि आज सुबह का ट्यूशन क्लासेस था। तो अभी मैं निकलूँगी फटाफट। सुबह हमारा ट्यूशन क्लासेस अभी स्टार्ट है और हम सबको पूछेंगे क्वेश्चन। देखते हैं कितना तैयार किया इन लोगों ने। रेडी? सुबह सुबह मॉर्निंग के ट्यूशन में मज़ा आता है। अच्छा, ये अभी जाएंगे यहाँ से स्कूल में डायरेक्ट सीधा। दिव्या, तो हम दिव्या को पूछेंगे सावी के क्वेश्चन, ठीक है? तैयार हो गए? હું સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ છું। પૃથ્વી, બુધ, શુક્ર કે નેપચ્યુન? સરસ। 0° અક્ષાંશ વૃત્ત કયા નામે ઓળખાય છે? ગ્રીનિચ, કર્કવૃત્ત, વિષુવવૃત્ત, મકરવૃત્ત? 23.5° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 66.5° ઉત્તર અક્ષાંશ વચ્ચે કયો કટિબંધ આવેલો છે? સમશીતોષ્ણ, ઉષ્ણ, તમામ? બી। કયો? સમશીતોષ્ણ। હું મારી ધરી પર 23.5° ખૂણો બનાવું છું। સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, શુક્ર? પૃથ્વી। સૂર્યનો ક્રાંતિ વૃત્ત વિષુવવૃત્તને વર્ષમાં કેટલી વાર છેદે છે? 1, 2, 3 કે 4? 2। કોના અંતરાયથી પૃથ્વી પર સૂર્યગ્રહણ જોવા મળે છે? ચંદ્ર, સૂર્ય, पृथ्वी, एक પણ નહીં? સરસ। आलेख को हमने बाराक्षरी तैयार करने के लिए दी थी। अभी देखते हैं उसने की कि नहीं की। आलेख कर दी? हो गई बाराक्षरी? बदी नहीं करे? चल वांच वांच चल। कन 2 मात्रा होय तो શું કહેવાય? કન 2 માત્રા તો કઈ કે? એકલું હોય તો કે કહેવાય અને 2 માત્રા હોય તો કઈ? કો, કઉ। એક કાનો અને 2 માત્રા એટલે શું બોલાય? કઉ। કમ અને કહ। हाँ, तो हमने इन लोगों को तैयार करने के लिए दिया है। तैयार करके अभी हम पूछेंगे कि कितना तैयार किया। तो अभी हम प्रिया को पूछेंगे एमसीक्यू। प्रिया रेडी? खनिजोना કેટલા પ્રકાર છે અને કયા કયા? 2, એક ધાતુ ખનિજ ને અધાતુ ખનિજ। હા, એટલે ધાતુમય ખનિજ ને અધાતુમય ખનિજ। બીજો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં ખનિજ કોલસાના ક્ષેત્રો જણાવો। મહેસાણા, ભરૂચ અને કચ્છ। સરસ। બીજું કેવું હોય તો આપણે સુરત અને ભાવનગર આવો। ત્રીજો ક્વેશ્ચન, કોલસામાંથી મેળવીને વીજળી શું કહેવામાં આવે છે? તાપ વિદ્યુત। વીજળીને શું કહેવામાં આવે છે? તાપ વિદ્યુત। ખનિજ તેલ ભારતમાંથી કઈ જગ્યાએથી મળે છે? મુંબઈ ને અસમ। ખનિજ તેલ ગુજરાતમાંથી કઈ જગ્યાએથી મળે છે? મહેસાણા, અમદાવાદ,
કલોલ કડીન વડોદરા અને ગાંધીનગર. સરસ. ઉર્જાના બિન પરંપરાગત સ્ત્રોત કયા કયા છે? સૌર ઉર્જા, પવન ઉર્જા અને ભરતી ઉર્જા. સરસ. સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ શેમાં થાય છે? સૌર ઉર્જાનો વોટર હીટર, પછી સોલાર કુકર. સોલાર કુકર. એશિયાની સૌથી મોટી સૌર ઉર્જા યોજના ક્યાં આવેલી છે? કયા રાજ્યમાં? મધ્યપ્રદેશના રેવાના ગામમાં. સરસ. પવનચક્કીનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? અનાજ દળવા, પછી વિદ્યુત ઉત્પાદન કરવા માટે અને પાણી કાઢવા માટે. પહેલાંના લોકો આવી રીતે કરતા હતા. સરસ. ચલો હવે સંધ્યાનો ટર્ન. संध्या रेडी? तो अभी बजे 10 और ट्यूशन क्लासेस ख़त्म हो गया, तो अभी मैं जाऊंगी नीचे। तो मैं घर से जल्दी आ गई थी वहाँ से, क्योंकि 9 बजे का ट्यूशन है, इसीलिए मैं जल्दी फटाफट यहाँ पर आ गई थी। तो अभी नीचे जाऊंगी और 11 बजे तो स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। अभी तो देर है, देखते हैं नीचे थोड़ा सा मम्मी को हेल्प कराते हैं। तो मैं अभी नीचे आ गई और मम्मी यहाँ पर सब्जी काट रही है और वहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, मैं वो धो दूँगी। अभी यहाँ पर बर्तन रखे हैं, वो अभी मैं वॉश करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ही देर है। मम्मी किसकी सब्जी बना रहे हो आप? गोभी। अच्छा, पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी और रोटी और दाल चावल नहीं? अच्छा, ओनली रोटी सब्जी। दाल चावल हम इतना खाते नहीं हैं, ओनली पापा खाते हैं। चलिए मैं बर्तन धो देती हूँ, बर्तन धोने के बाद मिलूँगी आपको। पर मैंने बर्तन धो के रख लिए, ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। और यहाँ पर मम्मी सब्जी को फ्राई कर रही है, तड़का दे रही है सब्जी में। तो अभी बजे हैं रात के 9 और हम लोग जा रहे हैं गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए। हम सभी लोग जा रहे हैं, पीछे कुछ लग रहा है, तो आप भी हमारे साथ चलिए गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए। ગુલાબનો હાર પણ આપણને દાતાએ આજે કે મારા તરફથી ગુલાબનો હાર પહેરાવવાનો છે।
मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम लंबोदर नमः स्वाहा सदा नमो तुझे આવે કોઈ હા હાથમાં ફૂલ પકડવાના અને દાદાને કહીએ આજે કીધું છે ને ફૂલ ને ફૂટે પાંખડી